Okay. So are you able to see the board? Okay. So food and its sources. Okay. So why we eat the food? Why we eat the food? All of you आप सब food खाते हो? Okay. So why we eat the food? Food gives us energy. Okay. Very good. Again, why we eat the food? To get the nutrients. Okay. Again, why we eat the food? To stay alive. Yes, to stay alive. Very good. Again, why we eat the food? To become healthy, to become disease free, for our growth. Okay. So, to prepare tissues. Yes. Okay. So, all my dear students, we need the food. Okay. आप ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं. ओके, सो वी ईट द फूड. ओके, हम सब लोग फूड खाते हैं. सो रीजन इज व्हाई वी ईट द फूड, बिकॉज फूड गिव अस द एनर्जी. Okay, food give us the energy to perform the different activities. You have to talk, you have to walk, you have to run, you have to think. Okay, there are so many activities. So for this activity we need the energy, and we obtain the energy from the food. Just like the two-wheeler, four-wheeler, it run on the fuel. Yes, na, petrol, diesel, it run on the fuel. So like this our body run on the fuel, and that fuel is food. Yes, that fuel is food. So food gives us the energy. Food is important for the growth. Food is important to stay alive. Then food is important to protect our body from the different type of diseases. Hello. Hello. Okay. To prepare? Okay, yes, to repair. Yes. Hello. Okay, 1 minute मी चेक करते हैं. ओके, मग तिने जॉईन केलंय का पण? नाही, तुम्ही माईक आणि व्हिडिओ ऑन नाही केलाय. मला दिसतंय श्रेया देशमुख, पण तुम्हीच तुमच्या साईडने माईक ऑन नाही केलाय. बाकी स्टुडंट जॉईन आहेत ना, तुम्ही जॉईन करताना तिथे एक माईकचं बटन येतं. तुम्ही रिजॉईन करा, तुम्हाला जॉईन नाही करता आलंय. कोणाला तरी विचारा, कोणाची तरी हेल्प. Okay, so food, why we eat the food? Basic reason is to obtain the energy. Food is important for the growth. Food is important to protect our body from the diseases, to repair the damaged part, to stay alive. We eat the food. Okay, so food is just like the petrol, diesel, fuel. Okay, two-wheeler, four-wheeler, it need the fuel. So food is fuel of our body engine. Okay, our body is like an engine. Okay, so for that food is the fuel. Now food contain certain substance, they are called nutrients. Okay, they are called nutrients. In the CBSE and ICSE book, there is another definition of nutrient: the chemical substance which are present in the food, they are called nutrients. Okay, the chemical substance which are present in the food, that chemical substance are called nutrient. This nutrient is important for us. Okay, so food atom that we eat in a large proportion on a daily basis, that is called staple food.
Okay, next one, next definition, that is staple food. Okay, so which food item is called staple food? The food item which we eat on a large proportion, that is called staple food. For example, आपके जो डेली प्लेट होगी, आप जब खाना खाते हो उसमें चपाती ज्यादा होती है कि दाल? चपाती. ओके, देन साउथ इंडियन लोगों के डिश में राइस ज्यादा होता है. यस ना, राइस ज्यादा होता है. सो द फूड आइटम विच वी ईट ऑन अ लार्ज प्रपोर्शन, यस चपाती, the food item which we eat on a large proportion, that is called staple food. For example, cereals. ओके, आप देखो आपकी जब खाना खाने की प्लेट है उसमें चपाती सबसे ज्यादा होती है, चपाती और अदरवाइज राइस. साउथ इंडियन होंगे तो राइस ज्यादा होता है और चपाती ज्यादा होती है. सो स्टेपल फूड मीन्स दोज फूड आइटम which are present in a large proportion in our food item, okay, in our plate, that is called staple food. Understand the two definition, nutrients and staple food? Yes. Okay, nutrient means the chemical substance which are present in the food, they are called nutrients. There are 5 major nutrients in our food: carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. Yes, there are 5 major nutrients in our food, that is carbohydrate, protein, fat, विटामिन, मिनरल्स. सेकेंड चैप्टर में हमें इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है. ओके, सेकेंड चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, देयर सोर्सेस, देयर डेफिशिएंसी, वो सेकेंड चैप्टर है. बट नाउ okay, our first chapter, yes, along with this water and roughage is also present. Yes. Okay, so human being eat the different type of food. Okay, this different type of food having the different taste. Okay, then food is different according to the habitat, according to the lifestyle, according to the need, according to the availability. Okay, so some people which are living in the coastal area, उनके फूड आइटम में क्या ज्यादा होगा? फिश. ओके, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनके फूड आइटम में क्या ज्यादा होता है? फिश. ओके, साउथ इंडियन पीपल्स राइस. ओके, सो लाइक दिस food is different. Food is different according to the lifestyle, according to the habitat, according to the temperature, availability. Okay, food is different. Okay, so people eat the food items which are made from the rice, such as idli, dosa, steam rice. जो साउथ इंडियन पीपल्स है, ओके, उनके फूड आइटम में राइस से बने हुए फूड आइटम ज्यादा होते हैं. So some peoples eat the wheat base, okay, like chapati, bread, noodles. Some people eat the chicken, egg, meat, fish. Some food item are eaten raw also, and some food item we eat cook. Okay, because when we cook the food item, it's soft. Okay, and its taste, yes, its taste is increases, it is soft, easy to digest. So some food item we eat raw also, and some food item we cook. Okay, so cooking make the different variety of dishes, and dish means a particular preparation of food, a particular preparation of food serve as a part of main meal, that is called dish. Okay, a particular preparation of food, okay, which is served as a part of main meal, and that one is called dish. Particular preparation of food item, particular preparation of food item which serve as a main meal, and that is called dish. Now, most of the food item, okay, we obtain from the two sources. Okay, the food item which we eat
we obtain from the two sources, which are that हम जो फूड आइटम खाते हैं हमें कौन से टू सोर्सेस से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल. वेरी इजी. Okay, the food item which we obtain eat, they are obtained from the two main sources, that is plant source and next one animal source. जो भी फूड आइटम हम खाते हैं, ओके, सभी फूड आइटम हमें मैक्सिमम टू सोर्सेस से मिलते हैं, दैट इज द प्लांट्स and animals. Okay, there are the different type of dishes. So to make the dish we need the different things. For example, I have to make the biryani. मुझे बिरयानी बनाने की है. सिर्फ एक फूड आइटम से बिरयानी बन जाएगी? नो. बट मुझे प्लेन राइस बनाना है. सिर्फ राइस वाटर साल्ट बन गया प्लेन राइस. बट सपोज I have to make the biryani, then I need many things. I need oil, spices, salts, rice, vegetable, water. Okay, so many ingredient make the dish. Okay, many ingredient make the dish. For example, my dish is biryani. But how biryani is made? By using the many ingredients. ये जो सभी ingredients है, सभी ingredients को use करके बिरयानी बनती है. Okay, so there are many dishes. There are many dishes. To make that dish, we need the ingredients. Okay, we need the ingredients. Okay, ingredient means substance which we add to make the food. Okay, to make the different type of dishes, I have given one example of biryani. Okay, so to make the different type of dishes we need the ingredient. Okay, now we obtain the food from the two type of sources, that is the plant source and next one animal sources. Okay, so first we see the information of the food item which we obtained from the plants. Okay, nutrient definition, staple food dish. Beta, I am sending the book PDF. You write down later on. मैं आयन काय को बोल रही हूँ. Just 1 minute, dear students. जब मैं हर एक की डेफिनेशन लिखते बैठी ना तो 6 मंथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा. ओके, यू हैव द टेक्स्ट बुक. मैं उसको मार्किंग करके दूंगी. आपको आज घर पे नोट डाउन करना है. आज क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू रीड दैट चैप्टर. You have to note down the definition with your hand in notebook. Okay, यहाँ पे मैं सभी राइटिंग करते बैठी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा विद इन द 5.5 month. इज इट ओके डियर स्टूडेंट? तो देखो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है आयन. ओके, टेक्स्ट बुक में स्टेपल फूड की डेफिनेशन दी है, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन दी है, इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन दी है. यू हैव टू राइट डाउन एज पर योर कन्वीनियंस. आपको जब भी टाइम है खुद की खुद लिख लेना है. ओके, इन योर नोटबुक. क्लियर माय पॉइंट? You have to write down your definition yourself at home. जब भी आपको टाइम है तब. बट कौन कौन से लिखने लगे तो मैं मार्किंग करके दूंगी टेक्स्ट बुक में. ओके, टेक्स्ट बुक के पेज पे मैं मार्किंग करके दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन मी केयरफुली. Okay, my each and every word record in your mind, your brain में रिकॉर्ड करना है. घर जाके रीड करना है. लगे तो मैं आज से डेली रिकॉर्डिंग शेयर होगी ग्रुप पे. लगे तो 1 टाइम लेक्चर लिसन करना होगा, वॉच करना होगा तो लेक्चर भी देख लेना है. ओके, एंड देन एट द एंडिंग ऑफ चैप्टर आई विल सेंड यू द MCQ टेस्ट. एंड हर टेस्ट में अच्छा स्कोर आना चाहिए. ओके, एवरी चैप्टर के एंडिंग में मैं टेस्ट लेने वाली हूँ. ओके, एवरी चैप्टर के एंडिंग में हमारी MCQ टेस्ट होती है. एंड टेस्ट इज जस्ट लाइक द NSO. ओके, आपके NSO की जैसे एग्जाम होती है वैसे अब ये टेस्ट रहने वाली है. अंडरस्टैंड द पैटर्न. फर्स्ट वन आई टीच यू डेफिनेशन. यू हैव टू राइट डाउन योरसेल्फ. यू हैव टू रीड, लर्न. मैं कुछ इमेजेस शेयर करने वाली हूँ, उसके भी पॉइंट नोट डाउन करना है, डेली रीडिंग करना है. एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द 1 MCQ टेस्ट एट द एंडिंग ऑफ एवरी चैप्टर. कोलिन्स के बुक में 17 चैप्टर है.
तो 17 टेस्ट होने वाले हैं. ओके, देन उगले सर के बुक में जितने चैप्टर है उसके भी टेस्ट होने वाले हैं. क्लियर माय पॉइंट? Okay, so continue to our topic, that is food and its sources. So the food item which we eat, there are two main sources, that is the plant source and next one animal source. Clear? Okay, so first one, that is food from the plants. कौन से food है कि जो हमें plants से मिलते हैं? Okay, food from the plants. Okay, there are so many foods we see step by step. Okay, yes. Okay, yes. Okay, yes, we obtain the food from the plants. So first one, that is, हमें तो प्लांट से मिलते हैं, बट प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं? सो प्लांट्स, ओके, प्लांट्स, यस, वेरी गुड. प्लांट्स मेक their own food. Plants make their own food, and that process is called photosynthesis. Very good, my dear students. Okay, plants make their own food. Plants खुद का फूड खुद बनाते हैं. Plants make their own food by the process, and that process is called photosynthesis. Okay, now how? Yes, very good, Ayan. Okay, how plant make their own food? For this plant need which things? Yes, plants को कौन से? Yes, yes. Okay, so plant need four things. Four things compulsory दिमाग में fix कर लेना है. Okay, plant need the four things. In that, first one is carbon dioxide. Then second one, H2O means water. Okay, then third one is sunlight, and then fourth one is chlorophyll. It is the green color pigment. Why leaf are green? Because leaf में green color का pigment होता है, that is called chlorophyll. Yes, so you have to learn these all four names. First one is carbon dioxide, second one is water, third one is sunlight, and fourth one is chlorophyll. Okay, so by using these four things, that is carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, green plants make their own food, and in this process plant use oxygen in the atmosphere. And which food? This food is glucose. Okay, this food is starch. Okay, this food is starch. ये जो food है starch. Okay, and starch is converted into glucose. This food is starch. CO2 means carbon dioxide. मनस्वी, CO2 means carbon dioxide. Okay, यहाँ पे नीचे लिख दूं लगे तो? Okay, carbon dioxide. Carbon dioxide. H2O means water. H2O means water. Okay, so किसी ने भी आपको पूछा व्हाट डू यू मीनिंग बाय फोटोसिंथेसिस, वेरी फास्टली आपका आंसर रेडी रहना चाहिए. फोटोसिंथेसिस. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्रीन प्लांट्स make their own food by the process, and that process is called photosynthesis. How green plants make their own food? For these green plants compulsory need four things. If anyone is absent, then photosynthesis does not take place. If anyone is absent out of four, okay, out of four anyone is absent, then photosynthesis does not take place. All four things are very compulsory. So which are that four things? Carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. By using these four things,
plant make their own food. That food is starch and it is converted into glucose. Okay, starch, it is again converted into glucose. And in this process, oxygen is given into the atmosphere. And this whole process is nothing but the photosynthesis. ये जो whole process है इसको बोलते हैं photosynthesis. Now green plants having another name. They are called producers. Okay, green plants having another name that is called producers. Why green plants are called producer? Because they produce their own food. Okay, because they produce their own food. Okay, so food from the plants. So there are the different part of the plants. Okay, there are the different parts of the plants, and from that different parts, okay, from that different parts, we obtain the food. So which are the parts of the plants? Very easy. First, second standard में आपने science में पढ़ लिया है. Root, stem, leaf, flower, fruit and seeds. Okay, हम downward से start करते हैं. Root, stem, leaf, flower, fruit, seed. Okay, so we obtain the food from the different part of the plants. Plants के जो yes, bird also, clove, लवंग. हम जो लवंग खाते हैं ना, clove, it's a dried bird. सिखाने वाली हो बाद में. ओके, सो वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स के जो भी डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स से हमें फूड मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द roots also, stem also, then from the flower also, then from the leaves also. So first one we see, that is we obtain the food from the roots. Okay, we obtain the food from the roots. Okay, plants के जो roots है, okay, उससे हमें food मिलता है. Okay, so this root is stored under the ground. This root is present under the ground, and those root which store the starch. ये जो roots है, okay, there are some roots, not all of, there are some roots which store starch. Okay, कोई roots ऐसे हैं कि उसमें starch is the example of carbohydrate. Starch क्या है? It's an example of carbohydrate. Okay, so there are some roots. Okay, there are some roots which store the starch, and that root is called modified root. उसको कौन से रूट बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट. एंड दिस रूट स्टोर द फूड. ओके, ये जो रूट है उसमें क्या स्टोर होता है? फूड. एंड विच वी ईट. एक्चुअली रूट है एंड हम खाते हैं. ओके, व्हाई वी आर ईटिंग दैट? बिकॉज इन दैट फूड इज स्टोर्ड. Okay, and this root is called modified root. Why it is called modified root? Because in that starch is stored. Starch is stored in this root. Okay, the root is rich in starch, and they stored the food that is called modified root. The root we eat raw and cook. हम raw भी खा सकते हैं, cook करके भी खाते हैं. So example of such root, that is carrot, radish, turnip, beetroot, sweet, no beta, onion stem में आता है. Okay, first I have to complete, then you talk. Okay, so which are the example of such type of roots? No beta, Swara, no. ओके, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, देन यू टाइप. One minute. Okay, so first part, that is food from the roots. So some root stored the starch in between them. There the starch is present, that's why they are called modified root. Okay, example is carrot, radish,
turnip, beetroot, and sweet potato. Okay, those are the example of modified root. It is also called underground root. Okay, which stored the food, starch and food. Okay, sweet potato. Then why onion is not? स्टेम में आता है बेटा. ओके पहले आप रूट समझ लो, बाद में मैं स्टेम एक्सप्लेन करूंगी. ओके इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम. 4 ऑप्शन दे देंगे आपको. ओके सपोज कैरेट दिया है, देन ओनियन दिया है, कॉलीफ्लावर दिया है, कैबेज दिया है. ओके सो डैश इज एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड रूट. तो कैरेट. ओके सो ये जो है मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, लीव्स सभी आपको लर्न कर लेना है बिकॉज एवरी ईयर कंपल्सरी क्वेश्चंस आते हैं. ओके मैं रिपीट अगेन. Some plants such as carrot, radish, turnip, beetroot, sweet potato, those are the roots. क्या है actually roots which stored the food and which we eat as a raw as well as cook. हम raw भी खाते हैं नहीं तो cook करके भी खाते हैं. Understand? Okay. Now next one, that is food from the stem. Okay, food from stem. Okay, actually they are the plants part. Which part? प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? स्टेम है. ओके प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम है. सो स्टेम ऑफ मेनी प्लांट eaten as the food. So example is potato, turmeric, ginger, then onion, sugar cane, then clocosia. Those are the example of stem. Okay, which are underground. एक कंद असतो एक क्लोकोसियाचा. ओके त्याला मराठीत काय सुरण की काहीतरी म्हणत असतील. So may I repeat? So stem of many plants are eaten as the food. Example is potato, turmeric, ginger, then onion, then sugar cane, then clocasia. Those are the stem. Actually जो हम खाते हैं plants का कौन सा part है? They are the stems. Just 1 minute. Okay. Colocasia. Okay, colocasia. It is the okay. ये जो क्लोकोसिया है, it is the underground stem. ओके अंडरग्राउंड स्टेम है. आप उसकी इमेज लगे तो मैं आज शेयर कर दूंगी ग्रुप पे. ओके सो those are the stem which are underground stem. Okay those are the stem which are underground stem and these underground stems are modified to store the food. उसका मॉडिफिकेशन क्या है? टू स्टोर द फूड. सो अगेन today you have to learn the list of modified stem, underground stem. Okay actually those are the stem. Chlorophyll is a green color pigment which is present in the leaf. जितेशा why leaf are green? Because उसमें एक पिगमेंट होता है that is the chlorophyll. आपने इंक देखी है ब्लू कलर की? इंक देखिए. ओके वो ब्लू कलर है, वैसे लीफ में ग्रीन कलर होता है. क्योंकि उसमें एक कलर पिगमेंट होता है एंड दैट कलर पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. अंडरस्टैंड नाउ?
क्लोरोफिल समझ में आ गया? क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का लिक्विड पिगमेंट है जिसकी वजह से लीफ ग्रीन है। वाई लीफ आर ब्लैक? ब्लैक क्यों नहीं है? वाई लीफ आर नॉट ब्लैक? क्यों ब्लैक नहीं है? ब्लू क्यों नहीं है? ओके, बिकॉज ग्रीन ही क्यों है? वाई लीफ आर ग्रीन? ग्रीन ही क्यों है? क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल। ओके, नाउ ओके। Okay, so may I repeat again? That is the food from the stem. Okay, so ऐसे कौन से स्टेम हैं कि जो हम खाते हैं एज अ फूड? ओके, पोटैटो, टर्मेरिक, जिंजर, ओनियन, शुगर केन एंड कोलोकैसिया। ओके, कोलोकैसिया, उसका इमेज लगे तो सबकी इमेज में आज स्टेम है। ओके, next one, that is food from the flower. Root stem समझ में आ गए? Is it okay with root stem? मैं रिपीट अगेन, रूट्स के फिर से रिपीट करती हूँ। कैरो, यस, उसमें भी पिगमेंट होता है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप। देखो, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के अलग अलग कलर होते हैं। आपने देखे फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स, उसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। सो वैसे लीफ आर ग्रीन बिकॉज उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। यस, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, बट अलोंग विद द क्लोरोफिल अदर कलर पिगमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो may I repeat again? Food from the roots: carrot, radish, turnip, beetroot, sweet potato. Those are the root. Yes बेटा, मैं रिपीट कर रही हूँ। श्रेया, मैं स्टेम का रिपीट कर रही हूँ। ओके, सो some stem, okay, some stems which are present under the ground, ground के नीचे होते हैं, they are called underground stem. And this underground stem are modified to store the food. उसमें food stored होता है। Okay, so which are the example of this stem which we eat as a food? हम potato as a stem है जो हम खाते हैं, potato, turmeric, ginger, onion, garlic, sugar cane, colocasia, those are the stem. Okay, actually वो plant का कौन सा part है? That is the, yes, okay, कौन सा part है? Stem, plants का stem part है। Now third one, that is food from the flower. आप लोग भी मुझे बताओ ऐसे कौन सा फ्लावर है जो हम एज अ फूड खाते हैं? एक्चुअली फ्लावर है, वेरी इजी है, फ्लावर है। ओके, प्लांट्स का, सी वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम टू मेन सोर्स, प्लांट्स, एनिमल। बट प्लांट्स के अलग अलग पार्ट है, हम रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, लिप भी खाते हैं, बर्ड भी खाते हैं। यस, वो स्टेमेन है। यस, ओके, यस। नाउ कमिंग टू अवर पॉइंट, सेफ्रन अलग है, स्टेमेन है, फ्लावर का जो बीच में का जो पार्ट है ना। ओके, आई विल टीच यू लेटर ऑन। नाउ अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रूट? ओके, देन स्टेम। Now next one, that is the flower. Okay, actually flower है plants का part. Okay, plants having different part, flower, but we eat as a food. हम as a food खाते हैं. So very common is cauliflower. Okay, broccoli. त्याच्यासारखंच आहे, ग्रीन कलरचं आहे, बरोबर आहे. त्याचा चुलत भाऊ बहीण आपण काय त्याच्या स्पेसिसचं म्हणू शकतो, बरोबर आहे. ब्रोकोली, हॅव यू सीन? Okay, so cauliflower, broccoli, even banana flowers also some people are making the dish. बनाना फ्लावर के भी लोग डिश बनाते हैं। ओके, देन पंकिन, पंकिन का जो फ्लावर है उससे भी लोग डिश बनाते हैं। ओके, सो फ्लावर ऑफ द सम प्लांट सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, बनाना, पंकिन, ओके, पीपल्स आर यूजिंग एज द। बेटा फ्लावर चालू है, बी कॉन्सेंट्रेट।
पहले फ्लावर चालू है. Okay, so that is the flower. Cauliflower, broccoli, then banana and pumpkin. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है banana. Okay, banana is dash dash part. We eat the dishes made from the banana, and from which part of the banana dishes are made? Root, stem, leaf, flower. Okay, कौन सा पार्ट यूज करते हैं बनाना का? फ्लावर. ओके, बनाने के फ्लावर की कोई कोई जगह पे वेजिटेबल्स बनाते हैं. क्लियर? बनाते हैं कोई कोई लोग. Ma'am, cauliflower is a flower or it is a part of flower? It is the flower. No. Okay, now next one. Is it okay about the flower? Yes. Okay, now next one, we obtain the food seed. Okay, food from leaf. Okay, हम कोई कोई फूड आइटम ऐसे कि जो हम प्लांट्स के लिप से, ओके, लिफ यूज करते हैं प्लांट का. फॉर एग्जांपल Coriander. कोरिएंडर, Spinach. स्पिनच. ओके, मीटिंग एंड झाली. Now okay, मैं okay. Dear students, are able to listen my sound?